we have three topics, and all the three topics are related to economy. We have three topics, and all the three topics are related to economy. First topic is foreign aid. The second topic is CPEC, and the third topic is informal economy. In today's lecture, we are discussing three topics. Number one is foreign aid. Number two is CPEC, and number three, that is informal economy. Now, these three topics are related to the economic sector of Pakistan. We have politics and we have economics. These two go together. The third thing that we have, that is culture, society, environment, defense, and in all these areas we understand how a country functions. So number one that we have, that is foreign aid. Whether foreign aid is a blessing, is it a solution, or it is the problem itself. Then we will discuss CPEC. There is also criticism on CPEC that it is a debt trap. It is a debt trap. Please share the link in safe WhatsApp groups. Saeed Ahmad, you or anybody. Today I think that Imran Khan is not here. So when we talk about a state or a country, and we talk about politics, economics, culture, society, defense, and environment. Please write this. My multi-dimensional approach to analyze an issue. Make a comment. My multi-dimensional approach to analyze an issue. Number one, political. Number two, economic. Number three, social / cultural. Number four, environmental. And number five, military. Please make a comment. My multi-dimensional approach to analyze any issue. Number one, political. Number two, economic. Number three, social or cultural. Number four, environmental. And number five, military or defense. I don't see your comments. My multi-dimensional approach, number one, political. Thank you, Faisal. I saw the first comment. My multi-dimensional approach. Now, in SAFE 5, we were discussing PTI. Now, when we discuss political problems or economic problems, the solution is not populism. The solution is not populism, because it is not a simple way that just by speeches and
bombastic language, we will solve the problems. Yes, other political parties, they did not contribute, and but we have civil military relations, we have our population and informal economy, taxation, debt burden, and foreign aid. All these are education system. These are all responsible for the problems that Pakistan has. But the solution is not the populism of PTI. We will have a debate some other time that which party is closer to international standards and which one is the best out of the political parties that we have. So that will be a good chance for your writing practice as well. So we can discuss politics, but for learning, not for political fighting. अब मसला ये है कि जब आपको मुसीबत है या कोई ऐसी चीज़ है तो फिर आप इंसान जो है वो खाली खोली हमदर्दी से भी खुश होते हैं, ठीक है ना। उसको गाली दो, ये चोर है, डाकू है, मैं ये करूँगा, मैं 50 करोड़ जो है वो नौकरियां दूंगा, तो मैं यूनिवर्सिटीज़ बनाऊंगा, तो लोग आएंगे, पाकिस्तान में जॉब्स करेंगे, मदीना स्टेट बनाएंगे। मतलब इस तरह की बातें जो है, बातों से मसाइल को हल करना लोगों को बड़ा प्यारा लगता है। मसला आप गरीब है और आप उसके शोल्डर पे हाथ रखते कि जी आप गरीब है, मेरे हमदर्दी आपके साथ है, देखो ना आप कितनी गरीब है, देखो ना ये रियासत कितनी ख़राब है। तो ये बातें बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी दिल को लगती है। लेकिन वो गरीब कहते कि यार मुझे बातों की बजाय कोई 5,000 रुपये तो दे दो, मुझे कोई स्किल तो सिखाओ, कोई क्रिटिकल थिंकिंग करो, मेरे लिए कोई मेरा मसला हल करो। आपकी बातें तो बड़ी अच्छी है, मेरे दिल को लग रही है, लेकिन क्या बातों से मसला हल होगा? सो दिस वॉज इन रेफरेंस टू द प्रीवियस डिस्कशन दैट पॉपुलिज्म इज नॉट द आंसर, पॉपुलिज्म इज नॉट द solution. We have to go for soul searching in a rational way that how political, economic, cultural, social, environmental and defense related problems of Pakistan will be resolved. Now coming back to this topic, when we talk about aid, foreign aid, so usually it depends how we utilize the foreign aid. मैंने बैंकिंग काउंसिल के एग्ज़ाम दिया था, तो मैं नेशनल बैंक में फाइनेंस ऑफिसर लगा था, लोन्स मेरे पास थे, तो हम लोगों को लोन देते थे। तो फिर साल बाद जब मैं गया, अब मैंने कहा जी वो लोन वापस करो। उसने कहा साहब जी वो तो मेरी बेटी की शादी थी, उस पर मैंने लगाया। तो मैंने कहा तुमने तो इसको एग्रीकल्चर के लिए लिया था या इंडस्ट्रीज़ के लिए लिया था कि मैं जी कोई कारोबार करना चाहता हूँ? वो जी वो तो सिर्फ बहाना था, वो तो मेरी बेटी जवान थी तो मैंने उसकी शादी में लगाई, अब मेरे पास तो पैसे नहीं है। सो व्हेन यू गेट फॉरेन एड एंड यू प्रॉपरली यूटिलाइज इट, then it can give you economic boost. It can resolve your economic problems. But if you misuse it in corruption or you don't utilize it for the purpose that you have got the foreign aid, so then it will be counterproductive. That's why our slogan should be trade, not aid. Please write it as a comment. Trade, not aid. We want that you should do trade with us. Imports, exports, international trade, investment, joint ventures, transfer of technology. There should be more exports from Pakistan. You should buy our products, give access to our markets so that to your markets so that we can sell our products. And for that we need diversification of markets and diversification of products. ताकि please write it, diversification of markets and diversification of market.
Diversification of market means new markets. Diversification of products means new exports. New exports. Diversify. Diversify means different. Diversity. मतलब हमारे पास वही चावल है, वही स्पोर्ट्स गुड्स है, वही टेक्सटाइल है, कोई नई चीज़ यार बंदे कोई मोबाइल बेचे, कोई कार्स बेचे, कोई टेक्नोलॉजी बेचे, कोई लैपटॉप बेचे। हम सारी जिंदगी यही टेक्सटाइल और चावल बेचेंगे दुनिया को। सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट ये है कि हमने सिर्फ जो है यूरोप पे और अमेरिका को हम चीज़ें बेचते हैं, तो यार सेंट्रल एशिया है, साउथ अमेरिका है, ईस्ट एशिया है, अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट्स so that we can have new markets for our products, and then there will be no need of aid because there will be export driven economy. Our big problem is foreign exchange. We don't have dollars. So how dollars can come? One way is foreign aid, कि हमें IMF या दूसरी कंट्रीज जो है वो एड दे दे, डॉलर दे दे, या एड दे दे, ग्रांट्स दे दे, लोन दे दे, ताकि हमारे पास डॉलर्स आ जाए। दूसरा तरीका यह है कि हम एक्सपोर्ट करें और हमें डॉलर मिल जाए, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ जाएंगे। एक तरीका जो है वो सी पैक का है कि सी पैक जो है उसमें अराउंड $70 बिलियन जो है, $70 बिलियन वो इसने लगाई है चाइना ने पाकिस्तान में, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल, फ्री इंडस्ट्रियल जोन्स। सो दैट इज आल्सो अ गुड वे, बट we should focus on utilization of the CPEC funds in a productive way. It should not be spent on security and non-developmental purposes and in salaries and packages. It should be properly used. Economic zones should be established. There should be factories, industries, local people should be employed, skills development should take place, and then CPEC will be an excellent project. लेकिन अगर हम चाइना से पैसे लेते हैं, उसको सिक्योरिटी और तनख्वाहों में वापस करते हैं, करप्शन करते हैं, उस पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं बनाते, रोड्स बनाते हैं लेकिन उसका फिर मेंटेनेंस नहीं होता, या जिन कंट्रीज में जिन एरियाज में गवादर है वहाँ के लोकल लोग उसमें एम्प्लॉय नहीं होते, तो फिर जो है इस तरह के मसाइल जो है वो बढ़ जाते हैं। So this is the issue that we have with the CPEC. One of the natural solution to the economic problems, that is informal economy. Pakistan has around 300 GDP, 300 billion GDP. हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, GDP, एक GNP है, एक GDP है। So our GDP is divided into 3 sectors: agriculture, industries and services. जितने भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर बनते हैं उसको हम GDP कहते हैं। ये प्रोडक्ट्स कहाँ बनते हैं? ये एग्रीकल्चर में बनते हैं तकरीबन 20%, ये इंडस्ट्रीज में बनते हैं तकरीबन 19%, और ये सर्विसेज में बनते हैं तकरीबन 61%। तो 61, 19 और 20 जो है ये 100 बन जाता है। टोटल जो पाकिस्तान प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो अराउंड 300 बिलियन जो है उसका वॉल्यूम है, 300 बिलियन उसका वॉल्यूम है। इस 300 बिलियन पर ईयर जो हम बनाते हैं, इसमें 20% जो है वो एग्रीकल्चर से आता है, 29% जो है वो इंडस्ट्री से आता है, और 61% जो है वो सर्विसेज से आता है। इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस, GROSS।
ग्रॉस का मतलब क्या है? टोटल डोमेस्टिक अंदरूनी प्रोडक्ट कि पाकिस्तान के अंदर कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो कौन बनाता है? जमींदार बनाता है, वो गंदम उगाता है, मकई उगाता है, शुगर कैन उगाता है, काटन उगाता है। नंबर 2 इंडस्ट्रीज है, 19% जो है वो इंडस्ट्रीज है, 20% जो है वो जमींदार है, और 61% जो है वो कौन है? सर्विसेज। सर्विसेज का क्या मतलब है? एजुकेशन सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज है, टूरिज्म है, रेस्टोरेंट्स है। ये जो आप होटल में खाना खाते हैं तो ये सर्विस है, उधर से भी पैसा बनता है, लेकिन वो आप पैसे देते हैं, वो आपको खाना देते हैं, खाना आप खाते हैं, तो वो एक सर्विस हो गया। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, आप सीमेंट खरीदते हैं तो ये इंडस्ट्री है। अगर आप गंदम खरीदते हैं तो वो एग्रीकल्चर है। तो ये हमारा इकोनॉमी है। अब 300 बिलियन जो है तकरीबन इतना इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मीन्स नॉन टैक्स्ड, जिसपे टैक्स नहीं लगता। अच्छा, एक और चीज है, उसको कहते हैं GNP। 20% जो हमारा फॉरेन रेमिटेंसेस है, जो पाकिस्तान से बाहर लोग काम करते हैं तो वो पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं, वो तकरीबन 20% है पूरी हमारी इकोनॉमी का। जितने पाकिस्तान में जमींदार काम करते हैं तो इतने जमींदारों के बराबर जो है, जो फॉरेन वर्कर्स है, वो पैसे भेजते हैं। ठीक है, उसको जब वो पैसे भेजते हैं बाहर वाले, और वो GDP के साथ मिल जाते हैं। बाहर के मजदूर, जमींदार, सनतकार और सर्विसेज, जब ये चार इकट्ठे हो जाते हैं, दिन वी कॉल इट GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें जो इनफॉर्मल है वो ये है कि इस पर टैक्स नहीं लगता। मसलन एक रेडी वाला है, वो टमाटर बेचता है, ठीक है, तो वो टमाटर बेचता है, अपने 5 बच्चों को पालता है, न वो गवर्नमेंट को कुछ देता है, न गवर्नमेंट उसको कुछ देती है। गवर्नमेंट ने उसको कुछ नहीं दिया, उसने हमने रेड़ा खरीदा है 10,000 का, 5,000 का, फिर वो मंडी जाता है, वहां से टमाटर उठाता है, वो लाता है, लोगों को बेचता है, कोई रसीद नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन वो अपने 5 बच्चों को पाल रहा है। तो इसको इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। अब इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है, इसमें टैक्स नहीं होता, अनडॉक्यूमेंटेड होता है, उसमें रसीद नहीं होता, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हैं। इसमें फिर ड्रग्स भी आते हैं, मंशियात भी आते हैं, इसमें जो है फिर गैर कानूनी चीज़ें भी आ जाती है, स्मगलिंग भी आ जाती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हवा हवा में होते हैं, उसका कोई कागज़, कोई रसीद, कोई सिग्नेचर, कोई रिसीट वगैरह नहीं होता। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स है, उसमें एक प्रॉब्लम जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट को आप टैक्स नहीं देते। जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो फिर वो गवर्नमेंट कैसे काम करेंगे, कैसे काम करेगी गवर्नमेंट? अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, उसमें तकरीबन 60% लोग टैक्स देते हैं। जो बंदा 100 रुपए कमाता है, उसमें से 60 वो गवर्नमेंट को देता है, और वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि जी आप मेरे ठेकेदार हैं, आप मुझसे टैक्स ले ले और मेरे लिए रोड बनाए, मुझे सिक्योरिटी दे दे, और मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे दे, और माहौल खूबसूरत बनाए, तो आप मेरी कमाई में से 60 रुपए आप ले ले। कनाडा में भी तकरीबन यही हाल है। तो इस वजह से वो कंट्री जो है वो डेवलप्ड है। पाकिस्तान में कुछ चक्की खराब है, कुछ जो दाने है वो खराब है। लोगों का हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है कि भाई हम टैक्स देंगे तो खा जाएंगे, और हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तो फिर वो डेवलपमेंट कैसे करेगी? डेवलपमेंट के लिए तो पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? वो टैक्स से आएगा। अगर आप टैक्स नहीं देते तो फिर आपके पास 2 और तरीके हैं कि हुकूमत जो है फिर अपना कारोबार करे, PIA चलाए, स्टील मिल चलाए, लेकिन हुकूमत जो है वो कारोबार कर नहीं सकती, क्योंकि हुकूमत का काम जो है, सरकारी काम को कोई काम समझता नहीं है।
अब पीआईए क्यों चलेगी? पीआईए एक सरकारी चीज है, उसका कोई ख्याल ही नहीं रखता, और उसके मुकाबले में जो है वो प्राइवेट सेक्टर में लोग ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, स्कैंडिनेविया वगैरह में कोई सोशलिज्म नहीं है, ये इतना बकवास प्रोपेगेंडा लोग करते हैं। वहाँ सोसाइटी है, सोशल सेक्टर है, लेकिन सोशलिज्म नहीं है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट जो बिजनेस नहीं करती। सोशलिज्म का मतलब क्या है? गवर्नमेंट बिजनेस करेगी, गवर्नमेंट वहाँ बिजनेस नहीं करती। सोशलिज्म में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के हाथ में होगी, जैसे कि पीआईए है, ये सोशलिज्म है। स्टील मिल चलाना, ये सोशलिज्म है। ठीक है, वहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कोई भी कंट्री जो है वो बिजनेस नहीं करती, लोगों से वो टैक्स लेते हैं, फिर लोगों पे वो लगाते हैं, तो उनका सोशल सेक्टर स्ट्रांग है। सोशलिज्म का मतलब और है सोसाइटी, सोशल सेक्टर, सोशल सर्विसेज, सोशल वेलफेयर, ये और चीजें हैं। तो ये these were the three topics. If you have any question or you want to write on any of these topics, so please write for my evaluation. Otherwise, I have my third class also, class number 3. So I will go to IR. So you have to study taxation. Taxation का system समझना बड़ा जरूरी है. If you don't give to government tax, then government will either do its own business or it will take loans from IMF and other agencies. अगर पाकिस्तानी कौम जो है वो टैक्स देना शुरू करे तो हुकूमत को कोई ज़रूरत नहीं होगी कि वो IMF के पास जाए या किसी से कर्जे ले ले या खुद कारोबार चलाए। There is no circulation of tax system. What does it mean? There is no tax system is not effective. इस तरह कोई लैंग्वेज लिखो, ये सर्कुलेशन का क्या मतलब है? There is no circulation of tax. A proper cycle of tax receiving and spending should be in appropriate manner, and credibility should be considered between masses and government. Credibility should be created, considered nahi, created. Yeah, there should be credibility between people and government. Can we apply Dambisa Mayo's new model for financing development for the world's poorest countries that does not rely on aid? Mayo offers 4 alternatives to the funding for economies: accessing the international bond markets, encouraging the Chinese policy of large-scale direct investment infrastructure, continuing to press for genuine free trade in agriculture products, and encouraging financial intermediation. So I don't see anything different here in Mayo project, because international bond markets, it is already there. Large scale direct investment in infrastructure, every government is doing it. मैं अमेरिका गया हूँ, वो अमेरिका के रोड देख के बंदा हैरान और परेशान हो जाते हैं, इतना बड़े बड़े रोड है उधर। दे हैव अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि वो कैपिटलिस्ट कंट्री है। प्रेस फॉर जेन्युइन फ्री ट्रेड, यस, इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। फ्री ट्रेड इज ऑलरेडी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, they are encouraging it. It is again capitalism, and encouraging financial intermediation. Now, who will be the intermediary? World Bank, IMF. So it is already going on. So I don't see anything unique in it. इसमें कोई नई चीज नहीं है। Yeah, so government should make the taxation system more effective, and there should be more taxes on rich people. The more you earn, the more you have to pay tax. The tax slab should be from top to bottom.
टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जो है टैक्स आना चाहिए। जो जितना ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स दिया करे, बिकॉज गवर्नमेंट इनेबल्स यू टू अर्न मनी। ये तो हुकूमत की वजह से आप कर रहे हैं ना। हुकूमत आपको सिक्योरिटी देती है, आपको हुकूमत ने आपके लिए रोड्स बनाई है, हुकूमत आपको बिजली बनाई है, हुकूमत आपको गैस सप्लाई करती है। तो जब हुकूमत ये सारे काम करते हैं तो आपको हुकूमत को टैक्स देना चाहिए। Corruption is a big problem, yes. Professionalism is not there. Transparency is not there. Good governance is not there. These are all problems. Pakistani army runs many businesses. Many businesses. जब आपने many कहा तो फिर आपने plural इस्तेमाल करना है। तो yes, army they do a lot of businesses. Some businesses are their welfare businesses, which are done by every army in the world. जो बंदा आर्मी से रिटायर हो जाता है तो उसको घर देना, डिफेंस कॉलोनीज बनाना, उस बंदे को जॉब देना, ये हर मुल्क में होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। तो दूसरे ये है कि आर्मी इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड इट इज ऑलमोस्ट करप्शन फ्री, वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आर्मी कभी आपको मना नहीं करते कि जी आप टैक्स न दे या इंडस्ट्रीज न चलाए। किसी भी आर्मी वाले ने किसी भी प्राइमरी स्कूल के टीचर के कान में नहीं कहा कि तुम सही टीचिंग न करो। यार 80-90 हज़ार रुपए ले रहे हो, सारा दिन तुम कुछ भी नहीं पढ़ाते, तो क्या ये आर्मी का कसूर है? डॉक्टर जो है वो काम नहीं करता, सरकारी मुलाजिम काम नहीं करता, तो सिविलियन सेक्टर जो है वो काम नहीं करता, तो आर्मी वाला इतना बड़ा बड़ा हमें नजर आता है। आप कैंट देखे और एसी का इलाका देखे, वो अपने कैंटोनमेंट को खूबसूरत बनाते हैं, उसमें स्विमिंग पूल डालते हैं, ट्रीज लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स बनाते हैं। वो एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन है। आप भी करें, आपको किसने मना किया कि ना करो? लेकिन हम नहीं करते। Sources of funding access to the international bond markets. Yes, debt trap is there, and debt trap is when you do not use the debt properly. When you are given debt and you don't use it properly, and tomorrow you have to give back, and you have not done it productively, efficiently. So yes, there are problems. Yes, so you should give suggestions. रहमानुल्लाह खान suggestions दे दे कि टैक्सेशन सिस्टम को हम कैसे ठीक करें। एग्जामिनेशन में आपको suggestions देने होंगे। आप सिर्फ ये कंप्लेंट्स नहीं कर सकते कि जी एतराज़ात करेंगे और जी फरियाद करेंगे तो हुकूमत ये है तो प्लान ये है। तो भाई आपके पास क्या सोल्यूशन है? एग्जामिनेशन में आपको एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है लिखना पड़ता है। अब ये कहीं कहते नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आप इन मसाइल को कैसे हल करते? कम से कम आज के नोट्स पढ़ो जिसमें मैंने आपको इसके हल दिए हैं। सिर्फ कंप्लेन करना, एतराज करना, ये मसले का हल नहीं है। No, no, no. They don't eat 80% of budget. It is totally wrong. Please study the budget, the allocation of funds, कि भाई आपका फंड जो है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, कौन उसको ले रहा है। आर्मी ने आपके 5-6 लाख 10 लाख लोग जो है उनको एम्प्लॉय किया है, उनको जॉब दी है। उसमें सिपाही से लेकर कैप्टन से लेकर मेजर से लेकर ब्रिगेडियर से लेकर जनरल तक उसमें लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। वो आप और मेरे जो है बहन भाई है, उनको उन्होंने जॉब दी है, तो उन लोगों को आप सैलरीज नहीं दोगे? शुक्र करो कितनी बड़ी आर्मी है कि इसमें 5 से 10 लाख लोग जो है वो बेरोजगार नहीं है और वो डिसेंट लाइफस्टाइल में जिंदगी गुजार रही है। तो बजट जो उनको मिलता है वो उतना मिलता है जितने उनको जरूरत है। दूसरी बात यह है कि आपकी एजुकेशन को, हेल्थ को भी कोई कम बजट नहीं मिलता।
आपके प्राइमरी स्कूल का जो टीचर है उसकी भी तनख्वाह जो है वो भी कोई 50,000 60,000 रुपए है, 1 लाख। वो कौन सा काम करता है? सारा साल जो है वो छुट्टियां करता है, सुबह 8 बजे आता है, 2 बजे चला जाता है। 3 महीने जो है कभी गर्मियों की छुट्टियां, तो कभी सर्दियों की छुट्टियां, तो कभी ये छुट्टी, तो कभी वो छुट्टी। बाकी लोग एफिशिएंट नहीं है, तो इस वजह से आर्मी आपको ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आता है। आपसे सेफ टू में एक लेक्चर नहीं होता और गाली आप आर्मी को देते हो। हमारे तो ये हाल है सिविलियंस का, एक पैराग्राफ आप नहीं लिख सकते। So this is a very good, excellent case study for Congo, and I have been to one Congo, DRC, Democratic Republic of Congo, but I will be going to this other Congo also soon. I will see it myself. Basically, they have governance issues. Governance issues. Good governance is not there. Yes. So USA is a big example for us. They take money and they invest it properly, and that's why they are the superpower of the world and #1 economy. ये हमारे पास एक बेहतरीन मिसाल है कि अमेरिका दुनिया का सबसे कर्जदार मुल्क है। कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, कर्जे का इस्तेमाल करना जो है वो जरूरी है। तो अमेरिका कर्जा लेता है, चाइना से भी लेता है, हर जगह से लेता है, उसको फिर इस्तेमाल करता है। इस वजह से उनकी इकोनॉमी जो है अभी भी दुनिया का #1 इकोनॉमी है। अराउंड 23 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ट्रिलियन। चाइना का भी कोई मेरे ख्याल में कोई 15-16 ट्रिलियन है, #2 है। पाकिस्तान तो कहीं है ही नहीं, 300 बिलियन कुछ भी नहीं है। तो यही कहानी है। The strong economy needs a strong business structure in case of business doing business. Ease of doing business. The ease of business doing business, क्या business business business। मैंने आपको कहा ना कि यार रिडंडेंसी ना करो, एक लफ्ज को बार बार इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज इट इज ओके। अरसलान अली कुरैशी। सो नाउ लेट्स गो टू IR। और IR में हम ये पढ़ेंगे कि भाई हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या है, सॉवरेंटी क्या चीज़ है, फॉरेन पॉलिसी हम कैसे बनाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इसका ताल्लुक फिर नेशनल इंटरेस्ट के साथ भी है। सो ऑल द बेस्ट, ग्रेट पार्टिसिपेशन, सी यू नाउ इन सेफ IR क्लासरूम।